बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दैट इज़ बॉर्न ओपनहीमर अप्रॉक्सीमेशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, खास करके जब हम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का को ना डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये साइंटिस्ट के नाम है बॉर्न और ओपनहीमर। इट्स एन अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पे वी मेक सम सॉर्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। तो फर्स्ट थिंग जो हमें माइंड में लेना है कि यहाँ पे हम कुछ अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट क्या करते हैं कि हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो एक न्यूक्लियर पार्ट होता है, फिर इलेक्ट्रॉन। यू कैन से न्यूक्लियर वेव फंक्शन, क्वांटम केमिस्ट्री में न्यूक्लियर वेव फंक्शन या इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन। न्यूक्लियर का जो मास है that is pretty larger than electronic mass, और approximately इनमें 1000 times के मास में डिफरेंस है, करीब करीब 1000 times। क्योंकि न्यूक्लियर का मास जो है, न्यूक्लियस का जो मास है, दैट इज 1000 times देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इन अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, वी put up an approximation that since the mass of nucleus is pretty larger, तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी जब भी ट्रांजिशन होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, फॉर एग्जांपल इसको हमने लाइट एनर्जी यूज सम electromagnetic radiation like ultraviolet visible, so electrons are getting transited from ground state to excited state. We assume that during this process the nucleus hardly undergoes any change, क्योंकि वो बहुत heavy है, उसका motion बहुत slow है, तो we assume that nucleus remains stationary। तो ये approximation में आप put करते हैं कि nucleus का mass बहुत ज़्यादा है compared to the electrons, तो during the transition of electron nucleus hardly undergoes any change, इसकी motion hardly matter करती है। We assume that it remains almost static, so it is stationary, it is said to be stationary। तो उसकी बुनियाद पर we are in a position to swallow the energy to actually represent the total energy of a molecule, that's why it's called approximation। तो इस approximation की बुनियाद पर तो इस अप्रॉक्सीमेशन की बुनियाद पर हम लोग क्या करते हैं, वी राइट द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। सिंस यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा जो मेन फोकस है, दैट इज द मॉलिक्यूल्स, नॉट एटॉमिक। वी आर नॉट डीलिंग विद द एटॉमिक स्पेक्ट्रा हियर, सो वी आर डीलिंग विद द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। फाइन, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे जो इस अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करके, so what we say is that we see that the molecular spectra is that spectra which arises from the transition of electrons, between the various energy levels. So, and those transitions, so during the the electronic transitions, there are in the molecules various transitions happen. So we have vibrational transitions happen, तो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो जाता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस, रोटेशनल ट्रांजिशंस, ठीक। सो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस, रोटेशनल ट्रांजिशंस, और since we are studying the electronic transitions, so when we study the molecular spectra, we are basically dealing with the electronic transitions, rotational transitions और vibrational transitions। electronic transitions जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि
जब हम अल्ट्रा वायलेट या विजिबल रेडिएशन मॉलिक्यूल पे इंस्टेंट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन और फिर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो उसके साथ साथ देयर बी रोटेशनल ट्रांजिशन एंड देयर बी वाइब्रेशन ट्रांजिशन। इसका मतलब है ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जीज है उनकी एनर्जी इज कंपेरेटिवली लेस देन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। फाइन। सो हम ये कहेंगे, ब्रॉडली हम ऐसे कहेंगे, द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ऐसे कहेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एनर्जी टोटल, that will be, so translational energy, rotational energy. Fine. So that is rotational energy, ROT. So vibrational energy, or electronic energy. This is electronic energy. So total energy of the molecule will be equal to translational, rotational, वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे मैंने और एक चीज़ इंक्लूड किया इस टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल में, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब जब मॉलिक्यूल मूव हो जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मॉलिक्यूल यहाँ से खुद यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, इट चेंज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक। अब ट्रांसलेशनल मोशन की जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, इट इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। ठीक। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंस इट्स एनर्जी इज लेस, वी कैन राइट दैट since translation energy is lesser than rotational, ठीक, and then we have that rotational energy is lesser than vibrational, which is lesser than electronic। तो इसकी वजह से हम इसको रिमूव करते हैं, ये जो, बिकॉज इसमें इसका जो वैल्यू है बहुत कम होता है। सो व्हेन वी रिमूव दिस, तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल is equal to rotational energy, vibrational energy, electronic energy. So total energy of the molecule is equal to rotational energy plus vibrational energy plus the electronic energy of the molecule. So ये हमने तभी किया when we जब हमने इसको एलिमिनेट किया, बिकॉज ट्रांसलेशन एनर्जी जो है दैट इज इट इज negligibly smaller. So based upon this approximation, that since the mass of nucleus is very large, 1,000 times than the electron, so during the electronic transition nucleus hardly gets affected, it is assumed to be stationary. So we could actually say that the total energy of the molecule is equal to rotational energy plus vibrational energy plus electronic energy of the molecule. Now let us illustrate these energies with respect to some, we'll take example of a diatomic molecule. Now take example of a diatomic molecule. अब हम before going to the diatomic molecule, हम यहाँ देखेंगे actually कैसे, how which we visualize this, because ये undergraduate course है, it's a basic course, so I'm not using any quantum chemistry or any quantum physics. So and looking at the examination pattern, अब ये कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी अल्ट्रावायलेट विजिबल देन एसोसिएटेड विद दीज ट्रांजिशंस आल्सो। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखी है, इसको लुक हियर। सो ये एक कैन सी नीचे, इट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम इन अ मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो व्हाट एक्चुअली इज देयर। अब यहाँ देखिए, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट E1, यानी अगर इसको एज्यूम करो ऐसे, so E1 state, it is excited state, E2 electronic state. And जब when the molecule absorbs electronic ultraviolet visible radiations, it goes from ground state to excited state. तो यहाँ अपना ये ground state मान लीजिए और ये excited state मान लीजिए E1। अब ground state में देखिए क्या है, there is, ये तो होगी आपका ground, ये ground state है पूरा। तो इसमें we have, this is called as, यहाँ से लीजिए V is equal to 0,
V is equal to 1, V is equal to so on. V मतलब it stands for vibration energy level, यानी वाइब्रेशन लेवल उनका भी ग्राउंड स्टेट, फिर वाइब्रेशन लेवल V1, V2 एंड सो ऑन. तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर हमारे पास होती है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स. उसके बाद यहाँ देख लीजिए J यहाँ पे लिखा हुआ, J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू, J इज इक्वल टू 3. तो इनके दरमियान हमारे पास है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स. J स्टैंड्स फॉर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स. तो जैसे J स्टैंड्स फॉर रोटेशन एनर्जी लेवल्स, जैसे REL रोटेशन एनर्जी लेवल्स बिटवीन V0 एंड V1. इस तरह से रोटेशन एनर्जी लेवल्स बिटवीन V1 एंड V2. तो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर होती है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स, और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर होती है रोटेशन एनर्जी लेवल्स. इसलिए हमने यहाँ पे देखा सबसे ज़्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के साथ, फिर वाइब्रेशन, फिर रोटेशन. तो इसका मतलब है ईच इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में वी हैव रोटेशन एनर्जी लेवल्स एंड वी हैव वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स. अब यहाँ ये जो क्या लिखा है 0 पॉइंट एनर्जी. 0 पॉइंट एनर्जी मतलब होता है कि हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर V इज इक्वल टू 0 स्टेट में है, यानी जब वो ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशन जीरो लेवल में, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन मौजूद होती है. ये हम निकालेंगे आगे 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जब हम शिफ्ट टू द वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. फाइन. तो अभी इसको नेग्लिफाई कर सकते हैं. तो अभी बस विल रिमेंबर दैट कि हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में वी हैव वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स और रोटेशन एनर्जी लेवल्स, और सेम इज द केस इन द एक्साइटेड स्टेट. अब यहाँ देख लीजिए वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर भी रोटेशन एनर्जी लेवल. तो व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, so it results in the rotational transition, it results in the vibration transitions, so they are actually associated with it. Fine. अब यहाँ पे हम इसको, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन यूज करके, बॉर्न-हाइमर अप्रॉक्सीमेशन हम कहते हैं, एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दिस एनर्जीज, लेकिन प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल can be said to be equivalent to rotational plus vibrational plus electronic once we have eliminated the translational part. अब हम एक just will go to take an example of a diatomic molecule. Now let us take a diatomic molecule. So we'll take an example of a diatomic molecule. Diatomic मतलब इसमें 2 atoms हो. Diatomic molecule. So we're taking the same diatomic molecule. Then we have 2 atoms in a molecule. It can be HCl and it can be anything. Let us take the example of HCl. Hydrogen atom is smaller compared to size is this chloride. So हम यहाँ पे दिखाएंगे इसको. So इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस. So this is interatomic distance. Fine. ये जो दरमियान में, तो this is Cl and this is hydrogen. ठीक. अब इस मॉलिक्यूल को लेके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब रोटेशन एनर्जी कैसे अराइज होती है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड रोटेशन. हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक्सिस डालेंगे, that axis is perpendicular to the internuclear distance, तो कहते हैं internuclear distance. और फिर मॉलिक्यूल को हम यहाँ से रोटेट करेंगे, इस एक्सिस के आसपास हम मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे ऐसे. सो यहाँ एक एक्सिस, एक्सिस की thrust we are rotating the molecule. Molecule is rotating like this. So that means the rotational energy arises when the molecule rotates about an axis which is perpendicular to the internuclear distance and passes through the center of gravity of the molecule. और ये center of gravity of the molecule. ठीक. इसी तरह से वाइब्रेशन एनर्जी हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इन दिस केस. सो नाउ दैट वाज द रोटेशनल पार्ट. सो वाइब्रेशन में हो गया H, हो गया Cl, H एंड Cl. तो वाइब्रेशन में जैसे हमने पहले भी कहा था, इट्स, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि बॉन्ड लाइक अ, नो, इट्स लाइक अ स्प्रिंग, इट्स लाइक अ स्प्रिंग. The molecule undergoes to and fro motion. These are the extreme positions. Molecules undergoing vibration to and fro, back and forth, from mean positions
to the extreme position, mean position to the extreme position. तो ये जो to and fro motion है, this is called as vibration. So that means the vibration energy is associated with the to and fro motion of the nucleus of the molecule, since the center of gravity doesn't change. अब देखिए center of gravity तो change नहीं हो रहा है. अभी extreme पे जाएंगे दोनों तो center of gravity is still same. Here center of gravity is still here. So during this vibration motion the center of gravity of molecule does not change. अब उसके बाद finally हमारे पास जो तीसरा है that is, तो ये तो हो गया rotational vibration. अब हो गया electronic. तो electronic में is हमको पता है कि electronic is associated with the transition of electron from ground state to the excited state. इसी molecule में when we irradiate this with the ultraviolet visible, the उसमें जो electrons है outermost electrons they undergo transition from ground state to the excited state. हमने कहा था यहाँ पे the electrons undergo transition from this state to the excited state. ठीक. So यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको दिखाऊंगा. तो ये गया आपका rotational वाला vibration and this is the electronic. So दोबारा I can say that electronic transition is the is basically the energy level is associated with the transition of electron from ground state to the excited state. ठीक? When it absorbs the suitable frequencies. So overall I can say that the associated within the electronic transitions are vibration energy levels, and within the vibration energy levels there are rotational energy levels. So once the molecule undergoes electronic excitation there will be simultaneously rotation and then to vibration energy levels. Fine. तो अब यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा. ये जो rotational energy associated है ये ERT, इसमें molecule undergoes rotation. It is observed the microwave region. ये हमने कल भी discuss किया था. A vibration जब molecule vibrates. Now this vibration phenomena, ये जो है this vibration spectra ये हम देखेंगे in the IR, in the infrared region, and the electronic spectra it is observed in the ultraviolet region of the spectra, the visible ultraviolet. So this is all about is level पे the basics of spectroscopy. This is all about the Born-Oppenheimer approximation. अब यहाँ पे मैं पूरा slide दिखा रहा हूँ. That basically दोबारा we'll just have a brief of it. Two scientists Born or Oppenheimer, they put up an approximation that now to understand the energy of molecules, they put up an approximation that the mass, the nucleus, since in a molecule the nucleus is, in an atom the nucleus is very very heavy, almost 1,000 times mass than the electron. So during any type of transition, during the electronic transitions, it hardly undergoes any change. It is assumed to be static. तो उसके बेस पे we could actually separate the vibrational motion, electronic motion and translational motion. So overall we see the energy of the molecule is equivalent to ET plus E rotational, E vibrational, E electronic. तो फिर चूंकि translational energy बहुत कम होती है हमने इसको neglect किया. So total energy of the molecule based upon the Born-Oppenheimer approximation, Oppenheimer approximation is equal to rotational plus vibration plus electronic. तो इसका मतलब है कि whenever we irradiate a molecule with the ultraviolet visible radiations of suitable frequency, during the electronic transitions there will be rotational and there will be vibrational transitions associated. So this is all about the topic for the day. अब जब हम जाएंगे rotational spectroscopy पे, vibrational spectroscopy पे, तो हमें ये better understand हो जाएगा कि how actually visualize this. So hope you understood that. If you have a question, you can talk to me later, or you can actually mail me, or you can call me, or we'll discuss.